Hello, good morning, dear students. In the previous, first of all, happy Rakhi to all of you, and hopefully that you enjoy your Rakhi celebration at your home, and hopefully that you are also safe. Okay, so in the previous video in the Tuesday, we learn about the attributes of the IMG tag, means the image tag: height, width, border, and the alter. So now we are going to learn the types of image. Also we learn the examples how to, and hopefully that you do the practical for that. If you are not performing practically, then you are not able to do the practical exam. Just because that query comes for the open office CLCs. कुछ स्टूडेंट ने प्रैक्टिस ही नहीं की और उनके क्वेरी आई कि मैम मेरा हो ही नहीं रहा, मैम मेरा नहीं हो रहा, तो नहीं ही होगा क्योंकि आपने एक भी बार उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की. If you do a once now, then you can able to do, you can understood what is the problem, what is the syntax and which thing I write. Syntax क्या है और मैं क्या लिख रहा हूँ. एक्सेप्ट जो होता है वही लिखना होता है HTML में. Just because HTML is the case sensitive language. उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, स्पेस की भी मिस्टेक हुई तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा आपके लिए. Okay, so now we are going to learn, and hopefully that you do the examples that I told you from the book. You have to perform that. Okay, so we are going to learn types of the image. There are mainly in the HTML we have to use the PNG, GIF, JPG or the JPEG, both you can say images. This is the PNG, GIF and the JPG images. As you know, nowadays the GIF is the more famous, that will be some type of animation. JPG is regularly used by you. Whenever you take the photo from the mobile phone or the laptop, you can, or the camera also, that will be comes in form of the JPG or the JPEG only, just because that give the high range of colors. And PNG, whenever you do the painting in your laptop or in your computer, that will be saved in form of the PNG. So let's learn them. Okay, one more type of the image is the TIFF or TIF. You get that will be a very high definition extension, that will be a high definition images, and the size is the highest for the TIFF image. उसकी साइज़ जो होगी वो हाईएस्ट साइज़ होगी. बाकी सब जो है JPG, GIF है, वो सब में हाईएस्ट साइज़ होगी TIFF. तो इसलिए हम HTML में TIFF को अवॉइड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो वेब पेज है वो अच्छा दिखे. क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ओवरलोड इमेज होती है, जो ओवर टाइप इमेज होती है, साइज़ की इमेज होती है, उसकी वजह से कभी कभार तो वेब पेज भी करप्ट हो सकता है. इवन आपकी इमेज करप्ट होकर आपको डिस्प्ले भी नहीं होगी. सो इसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी, डोंट यूज़ द TIF और द TIFF. आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी इमेज कौन सी टाइप की है? तो आपको कुछ नहीं करना. जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि IMG टैग के लिए हम यूज़ करेंगे सिंपली इन द एंगुलर ब्रैकेट IMG, देन SRC करके हम पूरा पाथ लिखते हैं, राइट. पाथ के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी पूरी पाथ कॉपी करते हैं. व्हेनेवर यू गो टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द IMG मीन्स द इमेज, देन यू कैन सी द टाइप ऑफ द इमेज. वो कौन से टाइप की इमेज है आप वहाँ से ही पता कर सकते हो. उसमें लिखा होता है फाइल टाइप, देन JPG, JPEG, GIF, whatever. Okay, so from that you can found the type of the image. So first is the TIF. This is only for the information. If you can see the TIFF or TIF, just ignore it. Don't use that image. And remember one thing also, the TIFF never compressed. If it compressed, it will be corrupted. It will be not displayed to you. So let's start. TIF stands for the tagged image file format. You have to be remember compulsory the full forms of the all the images type. आपको कंपलसरी याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द JPG, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द GIF. So you have to be remember that. TIFF images create a very large file size. TIFF are not compressed since they are not meant to preserve the quality.
so it will be not preserve you are the best quality just because it will be not compressed. They are good for the storing image that need to be edited later. The file types end with the .tif, means the extension is the .tif. Next, JPEG or JPG file. JPEG is an acronym for the Joint Photographic Export Group. Joint Photographic Exports Group. JPEG files are stored that are compressed to store the large information in the small size. Okay, that will be comes for the best quality. That will be you can compress it. Even you can प्रिजर्व द साइज ऑफ द इमेज. आप उसकी साइज भी कम कर सकते हो और क्वालिटी भी अच्छी ला सकते हो. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फोटोज दैट नीड टू डिस्प्ले द वाइड स्पेक्ट्रम फॉर द कलर्स while still keeping the file size small. Most digital cameras store photos in the JPEG format. The file types end with the .jpg or the .jpeg both. So whenever you take the photo from your phone, from your laptop or the camera or the digital camera, you can say that will be comes in the JPEG format. Just because that will be comes in the low size, small size and give the good quality of the image. Next is the GIF. GIF is a short form for the graphics interchange format, जो हम अभी रेगुलरली हमारे फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं. But GIF also come in form of the photo. Okay, so that will be also come in a photo. That is not a video. One type of image that is. फुल फॉर्म ऑफ GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. ग्राफिक्स से ही पता चलता है कि उसके अंदर क्या हो सकता है. वन टाइप ऑफ एनिमेशन. GIF files have a limit color range suitable for the web but not suitable for the printing. Remember this thing. Whenever GIF, what is GIF? GIF have a first a limited color. GIF जो है उसके पास limited color रहता है. Okay, I underline it, that's why you can understood that have a limited, sorry, I just okay, GIF have a limited color suitable for the web. वो वेब के लिए ही सूटेबल होगा, नॉट फॉर द प्रिंटिंग. प्रिंटिंग के लिए कभी भी सूटेबल नहीं होगा. अगर आप GIF की प्रिंट निकालने जाओगे तो उसकी प्रिंट नहीं निकलेगी या फिर निकलेगी तो उसका कलर चेंज होगा. दिस थिंग विल बी हैपन फॉर द GIF. दे आर सूटेबल फॉर द इमेजेस ऑफ द बैनर्स, बटन्स, चार्ट एंड द लोगोज. Remember these things also that will be suitable for the banners, button, charts and the logos. GIF can also be used for the animation. The file types end with the .gif. Remember the extension also. Next and the last, PNG. File with the extension .png. PNG or the portable network graphics file, same like a GIF, nears to GIF, not a GIF. Have a higher range of colors. But GIF have a limited range of color. And a larger file than GIF or the GPG, that have a larger file than GIF and JPEG, not to TIFF. The quality of this image is maintained even when they are compressed. जब आप उसकी साइज भी कंप्रेस करोगे तो उसकी क्वालिटी वही रहेगी. Whenever you are compress the PNG file. For the GIF and the JPEG, that will be some of the things will be quality will be changed. Not larger, but less of the quality will be changed for that. But for the PNG, the quality will be not changed. And it will be end with the .ping. You have to be remember this thing compulsory. Okay, now I give you one of the task to you. Learning by doing. This task that will be already given to your textbook. Create a web page that include a GIF image, animated image. You have to download from the Google.
Align it to the top right of the page and add the text to describe the image. आपको क्या करना है, आपका जो वेब पेज होगा उसके टॉप राइट पे उसको इमेज को रखना है, जो GIF इमेज होगी वो, एंड उसको टेक्स्ट को डिस्क्राइब करना है. जैसे सिंपल हम इमेज इंसर्ट करते थे वैसे ही करना है, बस उसका एक्सटेंशन, उसका टाइप चेंज होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है. यू हैव टू बी डू दिस बाय योरसेल्फ एंड टेक द photo of your web page and send it on my personal number. This is your task, and on the Monday we are going to learn the tables. So everything you have to be remember what will be tables comes, tables में क्या आता है, किस तरह से आता है, मैं सब कुछ आपको पूछूंगी. Then we are going to the start. Okay, so I am going to end here. On the next Monday we will meet again. Have a good day. Bye everyone.